हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीडिया शार्क्स पॉडकास्ट चैनल। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां शादी के बाद एक डर में जीती है। उन्हें लगता है कि बस यही मेरी ज़िंदगी है, मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरी फैमिली। वो कुछ नया कर ही नहीं पाती। अब कहीं जाके लड़कियों ने एक स्टेप लिया है कि वो हमारी जॉब शुरू कर दी है। उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया है, किसी ने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया है। अब लड़कियों को लगता है कि यही अब जिंदगी रह गई, बिजनेस या काम, बच्चे और परिवार। उसके आगे उनकी लाइफ में कोई पैशन ही नहीं रहा। बट जो आज हमारी गेस्ट है वो हमें डेफिनेटली हमारा सोचने का तरीका बदल देगी कि चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, इट हार्डली मैटर्स। अगर आपके पास एक गोल है, अगर आपके पास एक विजन है, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में अदर देन योर नॉर्मल कोर्स, आप कर सकते हैं। सो यस, टुडे आई एम इनवाइटिंग तन्वी देवरे, हु इज गोइंग टू स्विम द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल आपको बता दूं क्या होता है। इंग्लिश चैनल इज इन द आर्म्स ऑफ अटलांटिक ओशन, जो दो कोस्ट को कनेक्ट करती है, सदर्न इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न फ्रांस। So yes, she is going to swim this for 8 hours, that is 32 to 33 kilometers in the temperature of 18 to 14 degrees Celsius. It is going to be very cold. So let's hear this journey from Tanvi Devre herself. Hi Tanvi, how are you? Hi Prabjot, how are you? I'm good. So it's like our first podcast after a long, and because we are doing it on Mother's Day, I could have not thought of anybody else than you. My pleasure. So Tanvi, as I know you since years now because of Gauri and Tejas, but I've never personally known you. Okay, so all I know about you is you are a very shy kind of a person. You're not a camera person, you're not a social person. But having you here, I feel like a pleasure to have you here, and with a motto of why Tanvi is here today. Okay. Right. Firstly, happy Mother's Day. Thank you so much and happy Mother's Day to you also. So Tanvi, now first let's tell everybody who Tanvi is. Okay. What is your role at Viveda Wellness and what Viveda Wellness is? So I would want to hear more about you. So Viveda is a wellness resort which indulged with Ayurveda, yoga, naturopathy and all holistic healing practices. So Viveda's essence and values were always there in me. Like from my childhood, my grandfather used to teach us yoga. We used to spend a lot of time in nature. So all these values brought back and Viveda was formed. So it is just into me doing yoga, chanting meditation, practicing all the holistic and natural practices. That's how Viveda created. And Viveda is based upon 8.5 acres of land near Trambakeshwar. And it's doing great. It's 5 years old now. And it's just like my third baby. Nice. So as you're talking about babies, so you are mother of two twins. Yes. यहाँ एक नहीं संभाला जाता. You already have two. So balancing professional और personal life बहुत challenging होती है. ठीक है. हम जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपने वर्क के साथ, तो हम उसका भी बहुत बड़ा ये करते हैं कि ओ माय गॉड, मैं आई एम अ वर्किंग मॉम, आई एम डूइंग दिस दैट. ट्विंस के साथ में हाउ इट इज, कैसा लगता है आपको, कैसा, हाउ आर यू बैलेंसिंग? Yeah. So for the beauty of twins was I always wanted to have twins from my childhood. Oh, yeah, I just manifested it some or the other way. And it was a very challenging job. Yeah. But I had a great support system, like my family, my in-laws, my husband. So everyone, हम सब मिलके वो ट्विंस को अभी तक जितना पढ़ाया है, मैंने जहाँ तक रहा है, वो सब फैमिली का एफर्ट्स था. So I think support system matters a lot. And I decided that first 3 years I'm not going to work, I'm not going to pay attention to any of other things. Yes. Only growing Yes. up twins, paying attention to their childhood was my main motto. Right. So it was a beautiful journey for me. It was very hectic though. Right. But मैं पहले 3 साल तो मैं बस कुछ और सोच नहीं पाई, बस Right. वही था. I enjoyed their childhood a lot. Right. So तन्वी, जैसे ना आपकी फैमिली इज नोन, ठीक है, आई नो योर फैमिली वेरी, मतलब पर्सनली. सब लोग थोड़ा बहुत दिखते हैं सोशली. आई सीन देम इन पार्टीज. बहुत नहीं दिखते हैं. दे हैव देयर लाइफस्टाइल एंड अ वेरी गुड लाइफस्टाइल. आई मीन पीपल शुड फॉलो दैट. बट यू आर नॉट सीन अ लॉट. ठीक है. सो आई वांट टू नो
कौन है तन्वी, who is Tanvi, you know. And also talk about your upbringing, talk about your family. We want to know who's Tanvi because actually everybody wants to know कि लड़की कौन है, you know. So yeah, I was being grown in a very privileged family, and I had a very beautiful childhood, which I always stayed next to nature. इसलिए ज़्यादा मुझे शायद सोशली एक्टिव रहने की इतनी ज़रूरत मन से ही नहीं थी, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेचर, टू ट्रैक्स, टू माउंटेन्स, टू बीच, टू फॉरेस्ट. तो जब भी कभी लोनली लगता था तो माई ओनली थेरेपी वॉज गोइंग टू नेचर, गोइंग टू फॉरेस्ट और जस्ट डूइंग सम रैंडम ट्रैक. सो दिस वॉज एवरीथिंग. एंड एडवेंचरस तो मैं एंड आई वॉज ऑलवेज एडवेंचरस ऑल्सो, एंड दैट्स वाई जो भी अभी तो when you already have any adrenaline flow, तो you don't actually need to be very social, and वो ज़रूरत लगती नहीं है. So that, but I have my own very cute little circle, and I have friends childhood से लेके अभी तक जो मेरा ग्रुप है वो बचपन से अभी तक वही रहा है. और so I'm very blessed. I have a very small nice core group. So that's the, but I also love enjoying going outing, और socially भी अच्छा लगता है, पर मैं इतनी जाती नहीं हूँ. Nice. So now coming to something that incredible, I would say, that you're doing. Mom होना, daughter होना, daughter-in-law होना is a very different thing. ठीक है. उसके बाद जब आप कहीं जॉब करने जाते हो, it is an add-on. उसके बाद एक पैशन, एक अपनी हॉबी को इस लेवल पे लेके जाना है. इंग्लिश चैनल, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं इंग्लिश चैनल क्या है. जब पहली बार मैंने सुना था, आई वाज आल्सो ब्लैंक ऑफ व्हाट इंग्लिश चैनल इज, यू नो. क्या इतनी बड़ी क्या बात है, क्योंकि शी इज स्विमिंग इंग्लिश चैनल अबॉर्ड, है ना. बट देन व्हेन आई रेड अबाउट इट, इट इज a big thing. Like you have to swim 8 hours continuously under a temperature of 18 to 14 degrees. Yes. Right? So according to my pace, I'll take 14 hours, 14 to 15 hours of swim. Okay. So but then it is, but इतने ठंडे पानी में करना, ये thought ही क्यों आया कि why do you want to do this? I know that you are a very good swimmer. You know, you have done international and national swimming competition also. But शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, after taking a break of so many years, you, मतलब all of a sudden कहाँ से आया? You always wanted to do this? Is what is this? Was also one of your manifestation list bucket में था? No. So so until I remember, my grandfather had this whole book of library, और उसमें Guinness World Record का एक पूरा segment अलग था. So I was very fascinated with that, those all books, कि क्या रहता है Guinness World Record, क्यों ऐसे लोग करते हैं. और तब से वो मन में कहीं था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है. I want to do something different. I want to set a record for something. But it was a very vague idea back then. And when I gradually started, I always loved water. I was always a water baby. But I think it just came out of self-love. I wanted to explore more about myself. I wanted to see what are my capacity and capabilities. So I think English, so being into a sports of swimming, English Channel is something all swimmers want to do it. And so it just got strike कि मुझे करना है. So suddenly, after babies, I think it's just the intervention of ऊपर से कुछ आता है ना, संदेश की कुछ करना है. So it was a task, definitely. मेरे लिए it was a task to tell people, to tell the world, to tell my immediate family that I'm going to do this. This was my task. So my task was never completing the English channel. मुझे पता है मैं वो करने ही वाली हूँ. पर मेरे husband को बोलना, मेरे mother-in-law को ये कैसे बोलूँ, this was my task. And how was their reaction to this when you said this कि मुझे करना है? Yeah, so they were very supportive. पहले तो शॉक में ही चले गए कि यार नॉर्मल लाइफ है, विवेदा है, किड्स है, क्यों ऐसा सब कर रहा है. But when they understood कि नहीं, it's my passion and I want to do it, and maybe might be inspiration for so many of people. Yes. And my husband took it very very positively. तो इसको करना है कर. Yeah, there were many challenges कि मैं कैसे करूँगी यार, बच्चों को कैसे संभालूँगी. It's a very demanding endurance sport. Balancing with your family life. So it was a challenge, but I think meticulously if you plan,
कि इतने बजे यही करना है, इतने बजे ये करना है, या आज मुझे सिर्फ बच्चों के लिए टाइम हाँ. स्पेंड करना है. So that helped me plan it very in a Because- better manner. Yes. थोड़ा सा इंग्लिश चैनल के बारे में if you can just tell what exactly English channel is to the audience for them to understand, then we continue. Okay. So English Channel is 150 years old endurance race of swimming. Okay. So people say that लोगों के लिए जनरल पब्लिक के लिए एवरेस्ट रहता है, but for swimmers it is English Channel. Okay. It's a 33 kilometers swim from England to France. Oh. To France, you can say French shore. It's also the busiest channel because it connects the northern sea to southern sea. Okay. And that's the only passage which connects the both sea. Okay. So इसलिए it's the busiest channel. And there are a lot of challenges because the water is very cold. Yeah. It's 15 degrees, less than 15 degrees. Right. There are a lot of jellyfishes. Oh. And it is, if they get stung, it pains like half an hour के लिए वो pain होता है. You have to overcome that. The currents are strong. If the currents are not in favor of you, you might just get drifted to some other country. Right. So it's a very challenging swim. So I also studied, before any podcast, I do a little Yeah. of study of कि क्या होता है वगैरह. तो उसमें मैंने देखा है कि जो waves होते हैं, it is like 2 kilometers. It's 2, yes. 2 kilometers, and you may drift to some other Yes. side also. Yeah. Right? And जो ये as you said कि बहुत busiest है, तो वहाँ cruise चलती है, हाँ. वहाँ पे loaded ships चलती है and all. So do you also have it in mind कि कैसे होगा? What if? और जो आपके साथ एक बोट भी होती है, हाँ, एक जिसमें pilot, आपका एक yeah. पर्सन पायलट होता है जो आपको फीड करता है बीच बीच में. एंड आई सीन इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. आई सीन इंटरव्यूज ऑफ पीपल दे से कि हमारे पैर में हिट कर गया, ये कर गया. सो डू यू हैव दैट फियर inside you, or do you find it challenging कि ये कैसे So fear of seeing is something I was never afraid of. I think that is all addressed. ओके. तो थोड़ा बहुत लगता है fear कि यार jellyfish किसी ने Yes. stung किया हाँ, होगा. because But I what- think that I have already overcome it. राइट. My coach, I'm very blessed to have a very nice coach. He's from Bangalore and he's Okay. also done an English channel. ओके. And he's guiding me. So I think, so when he said that English channel is all 80% your mind game and 20% of physical endurance. Yes. तो तभी समझ में आ गया था कि ये किस लेवल का Yeah. टेमिंग ऑफ माइंड होने वाला है. सो आई थिंक आई हैव ओवरकम ऑल दोस फियर्स. डेफिनेटली ये सब फियर्स थे कि यार कोई बड़ी बोट आ गई तो, मगर ये सब और इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद Right. वो सब हो गया सॉल्व. एंड आई थिंक आई एम फाइन नाउ. So Tanvi, now when you are preparing for such a challenging competition, English Channel, आपको mentally और physically बहुत strong होना पड़ता है. तो उसके लिए क्या regime, या क्या routine आप follow कर रहे हो? So एक तो है कि I have decided to keep single-minded focus कि English channel will be the first priority and then everything, kids, career, family, everything. तो ही वो possible है, क्योंकि if you don't have that single-minded focus, then scatter हो जाएगा. Then you are in a dilemma कि Yeah. यार बच्चे फिर career ये वो. So for me, I have decided कि I'll keep at least 3 months जो अभी थे. I'll keep a single-minded focus. And yeah, it's a mind game. I would say it's a mind game. So every day your mind plays games with you. क्या जाना है नहीं जाना है. आज 2:30 बजे उठना ही नहीं है, जो भी है. Right. So इसमें I follow this Mel Robbins rule of 5 seconds. It's a nice book, Okay. Mel Robbins. और उसमें 5 seconds का रूल ऐसा है कि when your mind starts playing, अभी उठना है, अगर मैंने अलार्म लगा 2:30 का, your mind immediately start play with you. It start कि नहीं यार आज तो नींद ही नहीं हुई है, आज बच्चों ने सोने गए. So in 5 seconds you need to change the thought. तो ये मुझे बहुत हेल्प हुआ. और दिस ऑल्सो माई कोच हैज सजेस्टेड मी. Okay. तो मेरे को तो हर रोज मेरे को उठना ही नहीं है ऑब्वियसली. कितना मोटिवेशन कहाँ से लाएगा. सो अगर 7 आवर्स का स्विम है और 5 आवर्स के बाद माई बॉडी स्टार्ट्स पेनिंग, देन ऑफ कोर्स माई माइंड विल से कि नहीं यार अभी रुक जाएगी, हाथ टूट जाएगा, ऐसा. योर माइंड कैन जस्ट tame you anything. So that time you just apply that rule, 5 second rule. No, you have to do it. नहीं कुछ नहीं हो रहा है. So yeah, definitely it's a mind game. And so I also practice some visualization, some meditation, and writing notes is one of the Journaling. prioritized thing which I've been doing it. Yeah.
all these things help a lot ना, you're visualizing Definitely. कि मैंने कर लिया है, law of हाँ, attraction जिसको बोलते हैं हाँ, manifestation, manifestation. you follow it. I followed it. Try करती हूँ थोड़ा सा follow, and being in a being following yoga from many years. Yes. I know the power of meditation, visualization, Yeah. pranayama. Right. So, and of course, swimming is all about breathing technique. Right. The way you breathe. So pranayama has helped me In in that. So yoga has helped you a lot. Definitely, yeah, 100%. Yes. And what about your diet? Are you taking any particular diet too? Yes. So basically for English channel you need to have fats on your body because your skin should have that fat ka layer, omega 3 ka you need to have layer because to sustain yourself from cold. Because if you're swimming for 14 to 15 hours in that cold water temperature, your body tends to gain energy from your body. Okay. So energy कहाँ से लिए? तो fat से. Right. तो in the whole swim I might lose 6 to 7 kgs. Okay. So वो होना नहीं चाहिए. If I get cold, if बहुत shivering होने लगा, तो my fats will help me. Okay. तो my energy will come from fats. So for that मेरे को 3-4 किलो मैंने I increased weight. I gained little, and that is all about protein, carbohydrates, lots of nuts Yeah. to have that rich fat. Okay. तो इसमें जैसे they say कि when you swim a lot you get broad shoulders, Yes. your body tends to change. तो लोग ये नहीं बोलते कि यार तू तो swim करते जो पतला होना चाहिए, तो उल्टा हो रहा है, ये तो you're gaining weight. ऐसे you haven't heard about these comments. You won't believe every day I have this thing. इनफैक्ट मेरे ही बहुत नज़दीक के लोग मुझे बोलते थे कि यार तू स्विम तो कर रही है तन्वी 5-8 घंटे पर तेरी तू लीन नहीं हो रही है. देन आई हैड टू एक्सप्लेन दैट नो आई हैव टू ईट डबल द स्विम आई एम डूइंग इट. जितना कैलोरीज मैं बर्न कर रही हूँ उतना डबल मुझे खाना है क्योंकि तो मैं सस्टेन कर ही नहीं पाऊंगी. तो या मुझे थोड़ा वो था पहले कि यार मेरे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, मैं से वो डेलिकेट नहीं दिखूंगी पर and then it hardly अभी तो it hardly matters because the appreciation level is so high. तो अभी it hardly matters now. People don't really see it to you. पर पहले I struggled a lot, no doubt. कि नहीं यार I look manly, I won't be looking delicate, tanning हो जाएगा. That was the thing, but I overcome it. So जैसे स्टार्टिंग में ना लोग होते हैं कुछ एक चीज़ लेते हैं बहुत मोटिवेटेड रहते हैं वो चीज़ करने के लिए कि ये तो हमको करना ही करना है, पर जैसे जैसे टाइम पास आता रहता है वो एक मोटिवेशन लेवल या वो चीज़ें कम होती है. सो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ कि वो जब टाइम पास आ रहा है तो you are getting thoughts रोज कि will I be able to do it or not, am I going to do it or not, ऐसे कुछ. पर ये कि हाँ ये तो रोज ही होता है कि सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत लो हो जाता है. पर यही है कि यार तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम मैटर्स अ लॉट. फॉर मी व्हेन आई से कि आज मुझे यार विप्लव को मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को कि मुझे आज मन नहीं हो रहा है स्विम करने का. नहीं यार दिस इज योर ड्रीम, यू कांट, there is no U-turn. He says there is no U-turn to this. Yes. You have to go. So I think these all small matters. अभी कल भी मेरी जो दोस्त है मेरी स्विमिंग मेरी प्रैक्टिस ले रही थी तो मैंने उसको मेरा वर्कआउट बोला और मेरे कुछ लास्ट के जो सेट्स थे ना मैंने नहीं किया. बोली क्यों नहीं करने? बोले नहीं यार हाथ दुख रहे. बोले नहीं तेरे को फिनिश करना है. तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो मैटर करते हैं. इवन हम लोग जब बाहर जाते हैं तो दोस्त लोग बोलते हैं नहीं फ्राइड तेरे को खाना नहीं है. तो ये अच्छा लगता है. They understand और ये अच्छा लगता है क्योंकि I think we need validation. Yes. Every day we need validation, right? Yeah. So ये validation then converts into motivation and then inspiration. नहीं और कितना अच्छा लगता है ना कि people are supporting me for this. Exactly. Like they are understanding that how important this is and how it can change everybody's thought, how it is going to inspire others. So when we talk about inspiration, who is your inspiration? Who had been your inspiration to do this English channel or maybe to think so big? Yeah. Because not a normal girl, मतलब I would never have, मतलब मैं तो वैसे ही I'm not a swimmer या मेरे को इतने adventurous नहीं हो, but still anybody to think like this, to think such big, people को लगता है नहीं यार मेरी दूसरी priorities है लाइफ में इतनी हम engrossed daily chaos में कि ये हम भूल जाते हैं कि ये भी करना है. तो who had been your inspiration? तो दिस इज सो मुझे इतने लोग पूछते हैं कि तेरा इंस्पिरेशन क्या है. तो मैंने एक्चुअली जब इंट्रोस्पेक्ट किया कि व्हाट वाज माय इंस्पिरेशन, इट वाज अ वेरी बेसिक
basic people around me. For example, my massacre, I mean जो विवेदा जो मसाज वाली होती है, she's from Assam. She's just 20 years old. But वो उसकी फैमिली छोड़ के, उसका सब करियर, उसका सब फैमिली वगैरह सब उसका छोड़ के वो यहाँ पे आई है. She's doing a hard work. वो दिन के 4-5 मसाजेस करती है. Then she's living for herself, doing hard work. I think somewhat वो मुझे, that was my inspiration. For me, my friend who is doing a 9 to 5 job, managing 2 kids, managing in-laws, managing husband, a joint family. For me, she was my inspiration because शायद मैंने कभी ये पहले शायद कभी देखा नहीं हो कि यार जॉब करके भी ये सब कर सकते हैं. तो मैं उसको हमेशा पूछती थी यार तू कैसे कर लेती है यार, तू इतना काम भी कर लेती है और तू बच्चों को भी संभालती है, जॉइंट फैमिली में रहती है. तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन था. फॉर मी माई ब्रदर वॉज माई इंस्पिरेशन. यार अगर उसको चाहिए तो ही वुड हैव जस्ट बीइंग अ वेरी स्पॉइल्ड ब्रैट और but I see him, he gets up early, then he do hard. Like he has said that. Yes. So I think मेरे लिए inspiration, I was very sensitive about catching on inspiration. Right. So कोई बड़ा कोई inspiration नहीं था, just people around me. My mother-in-law was my inspiration. My very close friend who lost her husband in a very early age. And how she faced the world, उसने उसका career कैसे set किया, वो actually मेरे लिए inspiration था. So it can be any form, and then how I manifested, I matriculated it in an English channel. Right. कि यार ये है. तो यार मुझे तो लगता है कोई भी इंस्पिरेशन है यार. I think inspiration is everywhere. Right. जैसे अभी you said कि you have a question कि यार आप लोग घर, जॉब, बच्चे कैसे कर लेते हैं? हाँ. I had a question. घर, बच्चे, ठीक है, विवेदा and सब कुछ करके how do you manage your practice? Okay, so this was my challenge also, but when I organized, so I think meticulously planning helped me. तो मैंने एक टाइम टेबल बना लिया था कि ये टाइम पे यही करना है और ये टाइम पे बच्चों को ही टाइम. बच्चे कितने डिमांडिंग होते हैं. बहुत डिमांड की नहीं मम्मा, you know this is as you said कि मैंने सोचा हुआ है 3 महीने I am not going to get distracted. But kids are very demanding. I have a daughter, I understand. ठीक है कि how demanding she is. कि she'll call me 10 बार दिन में. अभी छुट्टियाँ हैं. She have no work to do. तो दिन में 10 बार she'll call me. When are you coming? When are you coming? So how are your kids supporting you in this? So they have been. I declared them. मैंने उनको बोल दिया कि I have to do this. And I explained it. What is it? मैंने एक ग्लोब भी लाया था उनको explain करने. वो मैप उन्होंने सेट कर लिया कि मुझे ये कंट्री से ये कंट्री तक स्विम करना है. So उनके लिए it's a different thing. और लंदन जाना है, 2 महीने वहाँ पे रुकना है उसके लिए. So they are also excited. Yeah. So what I did is I started calling them for my practice. तो जब वो देखने लगे कि यार 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मम्मी रुक ही नहीं रही है, she's just swimming, हम लोग इतना आवाज़ दे रहे तो उनको वो सीरियसनेस कहीं तो भी समझ में rooted हुआ. And then they understood. It was a very organic process. I'm sure they are so proud of you. They are very proud, and I feel so proud of because I have seen changes in them. The way they have been manifesting it, that they understand it. Maturity बढ़ गई है next level तक. So I think it was a win-win situation for both of us. कि और I think it's just a dilemma कि यार बच्चों को टाइम नहीं दे पाते. Following your passion. मैं तो ज़्यादा टाइम देने लगी उनको. बहुत क्रिएटिवली, बहुत अच्छे ने प्रोडक्टिव टाइम देने लगी उसके बाद. तो डोंट यू फील कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट इंस्पिरेशन फॉर 1 or 2 but too many, not only girls but boys also? Yes. Right? And इस पॉडकास्ट के बाद में आपके इतने इंटरव्यूज होते, boys and girls or anybody would also want to do something like this. If for say I want to do an English channel, what is the process? How can somebody who really wants to, is passionate to do something in swimming, can do this? What is the process of doing this? So you need to understand what is English channel. Right. And all the cons and pros of English channel कि क्या है English channel और उनकी वेबसाइट है. So वो वेबसाइट पे 2 साल पहले you have to register yourself. You have to register your swim. Book a pilot for yourself because all over the world ये जो इंग्लिश चैनल है ये सिर्फ 5 महीने के लिए ही है. उसके बाद इट गेट्स फ्रोजन. लाइक
उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है. तो you need to book your pilot. You need to start your practice 2 years or 2.5 years before. Okay. You have to prepare your body, gain weight, fix a coach if you want, and 6 months before you have to do your qualifying swim. Okay. So qualifying swim is you have to swim under 15-degree water temperature for 6 hours. You did that? Yeah, I did it. Where did you In do it? Nainital. Okay. So इंडिया में इतना ठंडा पानी कहीं मिल नहीं रहा था, so we went to Nainital, and apparently the water temperature was 11 degrees, Oh my. and it was so cold. It's so cold that I at one point मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगी अभी. I couldn't see anyone. I was just chanting Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. But again, the mind was very. It is a mind game. It's a mind game. My coach also said कि यार अपने body में इतनी ताकत रहती है, your mind cannot even think of it, and you can't even imagine. So if you higher your imagination and thinking level, you can. I think everyone can. मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है. अगर आपका माइंड है स्ट्रॉन्ग हाँ, आप कर सकते हो. कुछ भी कर सकते हैं. इनफैक्ट कुछ भी कर सकते हैं. मेरे को वो जो पावर है वो अभी मुझे प्रैक्टिस से आती कि ओके यार मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ. मैं कुछ मेरे बिजनेस को भी मैं एक लेवल तक कभी ले जा सकती हूँ. Yes. वो कॉन्फिडेंस मुझे ये सब जर्नी में आया है. आई थिंक ये सब चीजें हमें मतलब जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं देख हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. हाँ. है ना. हमें अपने आसपास के लोग भी कौन है ये भी हाँ, पहचानने में बहुत हेल्प exactly. करते हैं. आपका पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग पीपल आल्सो चेंजेस राइट. आपको समझ है कौन मेरे कोर लोग है हु इज देयर टू हु इज स्टैंडिंग बाय Yes. मी, who is there to support me. Exactly. Right. And जैसे आपने बोला your husband. Yeah. Now we'll come and talk about your Yeah. पहले तो hats off to your husband. Like I've heard so much about him Yeah. in your videos that you're doing, making and all of your channel, right? तो वो मैं देखती हूँ ना तो he's there everywhere. And I've heard so much. He also gets up. So it's not your alone competition. Yeah. He is also going to. He's also part of this journey with you, right? Yeah, so- कोई नहीं करता है. कोई नहीं करता. कोई नहीं actually. करता. He is doing it. I have अलग level का respect for him. I've heard so much about him. I've never met him. Once I met him in a party, Okay. and he's such a मतलब he's also just like you. I think he's Yeah. not too social. Yeah. You know, और वो उसमें he's supporting you. How was his reaction and how he's helping you? I know it, but I want people to know कि how he is doing it Yeah. actually. So मैंने आज ही उसको क्वेश्चन पूछा कि यार आर यू नॉट टायर्ड. 6 घंटा मेरे साथ वहाँ पे रहता है एंड वाई आर यू डूइंग इट. मैं खुद में उसको बोली कि वाई आर यू डूइंग इट. कि नो इट्स योर ड्रीम एंड इट्स माई ड्रीम नाउ. एंड सो मैंने उसको वही बोला कि अपनी सोसाइटी इतनी मेल शॉविनिस्ट है अभी भी. So if a man is doing something like this, a woman has 100% support. Right. वो उसको करेगी. अगर कोई आयरन मैन कर रहा है ना इंडिया में Right. तो इतना उसका खाने का ध्यान रखेगी, सब करेगी. पर ये अगर दूसरा सिनेरियो है तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा अपने सोसाइटी में Right. कि यार बीइंग अ मदर, बीइंग लाइक आफ्टर मैरिज pursuing any endurance event is no. It's No. a big no. It's a no. कर ही नहीं Yes. सकते. Yes. ऐसे कैसे? बॉडी आपको मतलब हम अपनी बॉडी को ही हाँ। एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी बॉडी हेल्प करेगी. हाँ, exactly. So I think his upbringing was very strong. He was not brought up in a male chauvinist society. I feel that. Yeah. कि मुझे उसने सब His values. he didn't question me. Yes. Why are you doing it? बच्चों को कौन देखेगा? ऐसा कुछ रहा ही नहीं. I just declared him कि मुझे करना है and he supported me, vice versa. He's always been there. You know, Yes. he's always. I've seen him. Like जो clips मैंने देखी उसमें he's feeding you. Yeah. You know, he's there with your protein shake, your bananas and all of that. Is he going to be there also with you? Definitely, yeah. So on my boat, my father and Viplav will be there. They both will be Yes. there. And how prepared they are. They are 100. So there is one challenge also कि वो जो भी बोट पे रहेंगे उसको उनको सी सिकनेस नहीं चाहिए. Okay. If they start vomiting, then whole my पूरा disqualify हो जाएगा. My swim will be disqualified. Okay. So we need to figure out वहाँ जाके कि मेरी practice session में he will sit on the boat and he'll see. Because the channel association is very strict about all these norms. छोटे छोटे जो चीज़ें हैं Okay. कि अगर बोट पे जो मेरा क्रू है अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर मेरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. So your मतलब तुम्हारा So we have- इतना सालों का practice हाँ, जो हाँ, भी बस, है, बस, yeah, yeah. it can
go So because I of somebody think else. उसके लिए भी for him and my father is also swimming So in send English them both channel. on Yeah. boat every day to Mumbai में जाओ स्विमिंग पे जाओ बोट पे रहो. So for them it's a challenge. So for them also they have to be on medication 10 days, 15 days prior my swim to not get the seasickness. So your dad has also been a मतलब inspiration, motivation Yeah, to you definitely. always. So for अभी dad का वो topic है तो my dad was not convinced. Okay. मुंह पे बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, विवेदा कौन देखेगा, हाँ. बच्चे कौन देखेगी, वो सब आउट ऑफ फियर, Obviously, yeah, out of fear. बिकॉज ऐसा किसी ने किया नहीं है और ठंडे पानी है वो हाइपोथर्मिया का केस इट कैन ऑकर. सो बट देन मेरे को तो करना ही था. सो एवरी मंथ आई यूज्ड टू कन्विंस हिम, आई यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड देन आई आल्सो थॉट कि यार कोई सिंपल चीज नहीं है कन्विंस करना, क्योंकि इसके पहले मेरे को कभी कन्विंस मेरे को सब मिलते गया. बट दिस वाज द थिंग कि यार मेरे को आई रियली हैड टू फाइट फॉर इट, मुझे इंग्लिश चैनल करना है. I mean, you saying this that you had to write a letter to your father to convince him. मेरे को आँख में आंसू आ रहे हैं because I know your dad. You know, he had always supported you, both brother and sister. कि तुमको जो करना है करना. इसके लिए I am sure it would be out of fear. Yeah, definitely. Otherwise, he would never stop you doing No, anything. no, he said that what you want to go, देखो world tour करना है वो कर, देखो if you want to stay in England for 2 months you go that. Why do you want to swim? Yeah. कुछ भी मांग ले यार, ये क्यों करना है. बोला नहीं अभी तो वैसे तो कोई शौक है And नहीं. how was your मतलब how did you feel when he said yes? Oh, I was on cloud 9. I started crying in front of him. Really? I cried and I just hugged him. I said thank you. मैं इसके अभी कुछ नहीं मांगूंगी. So I think this support is something we always look for from people. Yes. है ना? तो हमें या हमारे फैमिली वाले हमें अगर ऐसा सपोर्ट करे, I think things can change in everybody's life. Oh, it's Not only for girls, boys also. They have so many dreams. Yeah. You know, they aspire to do so much, but घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते. हाँ. हमेशा उनका होता है काश ऐसे पेरेंट्स. I always see कि काश ऐसे पेरेंट्स सबको मिले कि to motivate. And ठीक है घर वालों की भी अपने रीजंस होते हैं, बट एक टाइम दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गिव देम व्हाट दे वांट एंड देन सी हाउ करके तो देखो everything will change. And then it becomes your responsibility कि अब मुझे करना है to prove them कि what I asked for. और वो होता ही है. हाँ. Gradually it happens. Things change. Thinking changes. Yeah. So how do you think you are going to inspire like so many people to do this? Yeah, so because it is a big responsibility on you now. Yes. अब now Now people I have started knowing, at least in your city, people know कि तन्वी is doing. जिसको तन्वी को कोई जानता नहीं था, you know, everybody knew Kiran Chauhan is, everybody knew Tejas Chauhan is. Now everybody is going to know who is Tanvi Chauhan, right? So up things are going to change. You are getting that thing on your shoulders. How do you feel about it? So whenever I go to pool, I go to practice. Every day, some or the other person just turns out to me. Oh, you are such an inspiration. My child wants to meet you. My child wants to. So I think this all small things. My 4 friends started swimming. They learned swimming abhi. Oh wow. Seeing me. तो मेरे को लगा यार एक दो लोगों को भी अगर I tried to change their life, that is a big thing for me. Yes. And saying that. I already declared the word. तो मुझे तो अभी करना ही है, मैं करूँगी. But it's a very pride moment for me. अभी I feel very proud now that I'm going to be inspiration for so many people. Yes. And especially for the new generation. Right. You can dream bigger. Like there is no restriction to your dream, no imagination, nothing. So like since we thought of having you on this podcast this time, so I started talking to my kids about it. You know, कि तुमको पता है English channel ऐसा होता है. The next guest that I'm who's coming to my podcast, she's going to do this. ये क्या होता है? And they also have started getting inspired, motivated. हमको भी swimming सीखना है. The elder one, she's like not मतलब मेरी sister's daughter. She's not into swimming and all, but my daughter is. So she's also very much excited about it. So अगर किसी और की लाइफ में चेंज आ रहा है तो आपकी लाइफ में भी एक चेंज आया होगा. Confidence level is So what was the changes professionally and personally both? What has changed? So first I got to know that okay, people also seek inspiration. I thought कि यार मैं तो बहुत छोटे छोटे चीज़ों से मैं इंस्पायर हो जाती थी. मेरी मेट से मैं इंस्पायर हो जाती थी. And
मेरा वो पता नहीं, आई थिंक इट्स अ नाइस क्वालिटी ऑफ माइंड कि आई गेट इंस्पायर सो क्विकली, वेरी सेंसिटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स. बट अगर मेरे से कोई छोटा बच्चा इंस्पायर हो रहा है तो आई गेट अ वेरी गुड स्लीप. एंड देन प्रोफेशनली आई स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स. अभी जैसे इंटरव्यू के लिए जाना है तो उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है. व्हाट इज योर कैपेसिटी, व्हाट इज योर टैलेंट, व्हाट इज योर क्वालिटीज, वो सब पता चला. आई नेवर न्यू कि मैं इतनी डिटरमाइंड रहूंगी और मैं इतनी उठ के मैं ये सब कर पाऊंगी और कन्विंस कर पाऊंगी लोगों को, प्रूव कर पाऊंगी. तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट माय प्रोफेशनल लाइफ एंड आई एम ईगर टू get back to work now after channel. Right. I'm excited. There are so many things. अब मैं swim जब करती हूँ मेरे दिमाग में अभी 7 घंटा क्या सोचे यार. तो I get so creative कि अच्छा विवेदा में मैं ये कर सकती हूँ. I get extremely creative. Actually my next question was that कि when you swim for so long क्या thoughts आते हैं दिमाग में, क्या अच्छे positive negative किस तरीके के thoughts आते हैं? So I have realized that it's an active meditation. बिकॉज 7 घंटा कोई तुमसे बात नहीं करने वाला, तुम ना किसी से बात करने वाले, सब तुम ही तुम हो. तो मेरे को तो बहुत सारे आइडियाज आए पूरे ये जो 1 साल थे. एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट डेफिनेटली. प्रोफेशनल जो बहुत सालों से जो लाइफ का पर्सपेक्टिव था वो भी चेंज हुआ. एक एंगल से हम थिंक करते हैं ना कि ये ऐसे ही रहता है. तो वो 7 घंटे में the power of meditation is so strong कि वो भी चेंज हो गया कि नहीं यार मैं इतने सालों से गलत सोच रही थी किसी चीज के बारे में. So I think it's a very beautiful meditation. And जैसे you said कि लोगों का सोचने का तरीका, आपका सोचने का तरीका बदल गया. Indian society, मुझे लगता है it will take years for that to change their mentality. You know, if a girl is doing something, कोई भी कुछ कर रहा होता है तो उनको पहले questions आते हैं कि क्यों कर रही है, इसको क्या जरूरत पड़ी है, you know? No, actually कि क्या ही है, why she wants to do it, there would be something. So recently, I could relate to your question because recently मेरे साथ ये हुआ है. तो my school friend of my age, she texted me on Instagram asking my number. और she was very proud of all my process. मेरे पेज पे उसने लाइक वगैरह किया. तो उसने मुझे कॉल किया, तन्वी ये सब तो ठीक है तू कर रही है मगर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ. मैंने कहा अच्छा ठीक है पूछ, क्या हुआ. बोले यार सब ठीक है ना, तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच में, या फिर या ऐसा कुछ है नहीं ना, या फिर कुछ हुआ है क्या फैमिली में, तूने एकदम से ऐसे तेरा करियर शिफ्ट के लिए. बोला नहीं यार करियर तो मेरा वही है, पर तूने इतना प्रॉमिस, इतना क्या बोलते हैं चैलेंजिंग इवेंट क्यों लिया है. तो मुझे तभी समझ में आया यार लोगों का पर्सपेक्टिव ही कुछ और है. इफ अ वुमन इज doing an endurance event, if she is challenging her own body, extending her limits, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ में कुछ होना चाहिए. नहीं, but there is a different angle to it also. Like as you said, she's asked out of innocence. She's also asked out of, as we were talking just now, कि upbringing ऐसे है, वो देखा ही वैल्यूज ही वैसे है, वो सब हमने देखा ही ऐसे कि ऐसा ही होता है तभी ऐसे करते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मली हमारी फैमिलीज या फ्रेंड्स अराउंड हमने देखा ही नहीं है, कोई एग्जांपल ही नहीं है. कोई एग्जांपल नहीं. सो यू आर सेटिंग एन एग्जांपल. सीइंग यू, आई हैव स्टार्टेड, मतलब आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि मुझे अब हर वीकेंड ट्रैक करना है, या मुझे मतलब नेक्स्ट मैराथन जो भी होंगे ईयर्स के, आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ऑल मैराथन्स. सो दिस इज वन मोटिवेशन दैट आई हैव पिक्ड फ्रॉम यू. सो आई वांट यू टू शेयर सम एडवाइस, you know, or few words or message to the society that what can they do, or what message do you want to give to them? For the women, I feel that after marriage वो खुद ही अपने आप को एक रेस्ट्रिक्टिव जोन में ले चलते हैं कि नहीं यार मैं अभी आई गो वाटरफॉल्स ट्रैक और आई गो ट्रैकिंग एवरी मॉनसून. तो मैं जब मेरे फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि चलो यार तुम भी चलो, तो बोले हम तो नहीं, हमको तो इतना मन नहीं है, पर बच्चों को वाटरफॉल लेके जाना है. बोले यार वाटरफॉल इज अ नेचर, इट्स अ नेचुरल एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स में से एक है. तुमको क्यों नहीं खेलना है बारिश में, तुमको क्यों नहीं नाचना है यार, हम भी तो कर सकते हैं. तो वो जब वो पता चलता है कि यार इसमें कुछ अलग ही मजा है, और जब इतना बड़ा वाटरफॉल तुम अपने आम पे लेते हो तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. वो सभी अफेक्ट्स करते हैं यार वो सब चीजें. वो कॉन्फिडेंस लेके तुम घर जाओगे और फिर तुम यू फॉलो योर नॉर्मल रूटीन वगैरह. तो आई वुड लाइक टू से दैट there is no restriction to your limits, and in fact after marriage, and you can convince your
in-laws, you can convince your husband, you can convince everyone around you. Yes. When you have that When you know you are right, exactly, you can do it. yeah. Yeah. तो मेरे को भी ये था कि यार मैं इंग्लिश चैनल तो कर रही हूँ, मगर मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, वो पहले के जो फेस थे, right. मगर जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो अभी तो वो हार्डली इट मैटर्स. Right. So I think don't be restrictive, just be yourself, let your mind and heart wander. हम लोग इतने हम लोग इतने डरे हुए होते हैं अंदर से कि हाँ. हम किसी को अपने ड्रीम्स के बारे में बोलेंगे, बता ही नहीं पाते. तो वो कैसे इसको लेंगे, विल दे हाँ. एक्सेप्ट इट और नॉट, विल दे सपोर्ट अस और नॉट. हम खुद ही अपना दबा देते हैं सबना कि छोड़ना, किसको क्या बोलना है. No, my mom, they will not take it. and while growing up, my mom always used to say, yaar, I wanted to be an IAS officer. Why didn't you be? I couldn't say my father that I want to learn more. Yes. Because societal pressure, then Indian chauvinist, ये सब, and the fear of judgment is so much that तो मैंने हर बार सुना था, इवन माय मदर इन लॉ से, कि यार मला पण असं काहीतरी करायचं होतं. And I feel so, at least she has that urge in this age that okay, even I want to do something like this. So अभी और काफी मतलब I don't know how to put this across. I don't want to say negative about anybody, but आज भी बहुत लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें शायद सपोर्ट मिल भी जाए, but they don't have a vision. They don't want to do anything for themselves. They are happy partying. They are happy socializing. Yeah. They are happy going to parlor. They are happy going to vacations. They have no goal or vision in their life. They are happy spending their husband's money, and which is right. ठीक है, they have got that. But still, I feel every woman should have a goal in their life. True. Because their kids, अब जो next generation है, they are looking up to us. So कुछ तो दो यार society को. अब एक चीज होगी, you will get 10. True. So I think this challenge that you are doing would have changed you as a person. Definitely, yeah. How? It's changed. It has raised my confidence. It has changed my perspective of my life. मेरे को ऐसा लगता था कि यार ऐसे चीज़ों को लोग शायद सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. तो it will be my own journey. I'll swim, I'll train, I'll go there. But now it has become a city's challenge. Yes. Now every day I'm getting a random call. Okay, I want to support you. One of my uncle, very close family friends said कि यार अभी कुंभ मेला आने वाला है सिटी में, so you invite world to. I mean, people के इतने अलग-अलग ideas and they are being joined, they have been supportive me. तो मेरा ये पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया कि नहीं यार, लोग एक्चुअली अच्छे पर्पस को सपोर्ट करते हैं. And yes, confidence level has increased. I have seen changes in my kids. They are being their own. You have become more disciplined. I have become more disciplined. I was a very ledgerable person कि उठना है, काम पे जाना है, नहीं जाना है. And ऐसे थोड़ा ease on थी मैं लाइफ में कि यार कुछ calmness आया अंदर खुद के. हाँ, काम तो I was always there. But I know what is my power now. I think I feel very powerful within. Now what after English Channel? Because I'm sure you'll do it. The confidence, I can feel that vibe, you know. I feel that confidence and I feel so proud of you. Yeah. You were doing such a thing for this. And अभी मेरे को वो vibe आ रही है कि she will do it. She'll make it. Now what after English Channel? Do you have already envisioned what you're going to do? Have you thought about it? Or you think, now after this I'll just focus on my work for some time and then think about it? I haven't decided any endurance event, but I'm craving to go back to work. I want to go because there are so many things. I have channel है कि ये सब करना है, क्या क्या notes निकाले, तो मुझे अभी बस ये खत्म होने के बाद मुझे वापस जाना है. And I'll be a different person at work now. मुझे ऐसा वो लगता है कि I'll be a very different person at work. I'll be more hardworking now. So how is your people around you at work taking you, like, because you're not there available so all the time now? Yes. So past 1 month I've exited, like I've taken a long break. Okay. And I've been addressing them कि यार मैं जाने वाली हूँ. Though I miss the workplace a lot. It was work. I couldn't live without Viveda, but अभी मैं कर रही हूँ. Yeah, they're taking it very supportively. I have a great staff. My GM is very nice. I have my sister and everyone over there. Nice. So I keep a track though. हाँ, because see, work is something you cannot. कितना भी कोशिश
मैनेज कर लो, वर्क विल नेवर लीव। And that was वो क्योंकि कुछ चीजें होती है जो आप ही रिजॉल्व कर हाँ, सकते हो, so they yeah. call you again and again. no, now they don't. Now I was very reluctant कि मैं ही call करती थी, but कि मैम we are Doing it, we are managing doing it. good. It's not a problem. Nice. So, Tanvi, other than business, other than wife, other than being a daughter, daughter-in-law, mother, this English channel, what you like the most? खाने में क्या पसंद है, या घूमने में कहाँ पसंद है, या what is the other hobby that you have that nobody knows? That is like it is you. It is something you do out inside your Okay. room. But people don't know about. I love singing. Oh, wow. Yeah. I love singing. Can we No. can we hear some of it? थोड़ा बहुत तो अभी जो बोल ही दिया ना, let Oh them God. see कि what kind No, of I singing. haven't prepared. No, अभी मेरा कुछ I'm very conscious right now. But I love art also. Okay. And I love I think मुझे ऐसे सब थोड़ा सब because बचपन से मम्मी ने मुझे सभी चीज़ों में डाला था, थोड़ा डांसिंग. I love acting. Oh. I love मैं मेरे Do you फ्रेंड्स do mimicry? Yeah. किसकी mimicry? चल mimicry तो हो ही जाए, अभी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा कुछ तो भी. Let them see, you know, कि what is the other side. I'll sing rather. Yeah, I'll okay, sing. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. Very nice. They're so talented. मतलब मैंने जितना सुना था आज तो मिलके देख के, because I don't think so we ever had this kind of a long conversation ever. We know each other since long. Since a very long time. Yeah, but I really feel proud of you. Thank And you so everybody is proud of you, and all the very best, Thank Tanvi. you so much. You're an Manju. inspiration to many, and I hope you get the medals home. Yes. What do you get, medals? It's And just trophies. an attempt. It's, Okay, you don't get get it, so anything. so people say like it's not a competition, it's an attempt. You finish, you reach the French shore and you are on But the it would be okay again. Sorry, I actually wanted to cut this, but I want to continue this for this thing. Ki, when you reach there, are you going to take the Indian flag and host it there? No, so so the French province does not allow it to do it Okay. on their shore. Okay. I'll touch it, I'll get on the boat, and then in Dover You do that. I'll just wrap myself with Indian It's such a flag. proud moment. Yeah. The first thing I'm going to pack is Indian flag, and then I'll be the first woman in the. I'll be the first mother in the country to Wow. do the English channel. Beautiful. So you're going to, as it is, set a record for India then. So and thank you Media Shark for letting me use this space to be myself, to let people know my journey. So I'm very No, thankful. we are proud and we feel privileged to have you, so that through our podcast, so many of the girls, boys, even ladies would get inspired and pick something that they really wanted to do always. So thank you so My much, pleasure. Tanvi. Thank you Thank so you. much. Thank you.